Assalamu alaikum and warm welcome to this run chase. 216 is what Nag and Munir Butt is looking for. The two openers in the middle. And talking of Irfan Cricket Club in a hurdle, they have runs on the boat, no doubt about that. They have huge amounts of runs. They are 216 to defend. And let us see how the two batters will react and respond to the situation over here. 216 will take some doing. But talking of dimensions and the carry of the ground is nice and fine. I believe we are in for a great game of cricket here. That is semi-final number 2. Chase time here at the Sun. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। बिग बैश मथुरा के चलते ये दूसरा और अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला दूसरी पारी में 216 रन बनाने हैं यहां से HCC क्रालपोरा की टीम को। नाग और उनके साथ मुनीर बट, ये प्रारंभिक जोड़ी और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अगर इस मुकाबले की बात करें, एक अच्छी रन संख्या स्कोरबोर्ड में पहली पारी पर लगा चुके हैं इरफान क्रिकेट क्लब की। 215 रन एक आसान लक्ष्य नहीं रहने वाला, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी हमने पहले भी जिक्र किया, चाहे वो प्रारंभ में इश्तियाक रसूल, मुनीर भट्ट हो, जहांगीर लोन आपके पास, आकिब मीर आपके पास, तास खान आपके पास, इम्तियाज मल्ला आपके पास, नासिर गनई आपके पास और उसके अलावा आकिब खान आपके पास, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी यहां दूसरी पारी में भी इस टीम यानी कि HCC की ओर से देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जैसा आपने पहले स्पष्ट कर दिया कि एक संघर्षपूर्ण मुकाबला अवश्य देखने को मिलेगा। Nag is in and he's got Munir Butt on the other side. Abid Gul is warming up a bit, jumping, and he's going to open the attack with the new ball. And do you remember Nazir in RPL? He bowled some tight lines, some of the in that Kashmir Cup at TRC bowled some terrific spells, but today it's a different tournament. It's a different surface, matty surface we're using, and he need to take care of his line length too. But he's got a lot of experience. He's got loads of experience. Slip is in place straight away for Nag. In the air, and there is a man. Miracle Yaqub takes it, and Nag departs. First blood is drawn, and look at the celebration from Abid Gul. Ball holding up a bit and kicking up the surface, and Nag is gone here. First blood is drawn. Nag on his way. पहली गेंद पर विकेट मिला। हालांकि नाग का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहता है। वो एक विस्फोटक बल्लेबाज है, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में उनको एक विकेट मिला। बल्लेबाजी में शुरुआत में पहली गेंद पर वो आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 215 जो पहली पारी में बने 216 का लक्ष्य, लेकिन पहली गेंद पर विकेट मिल गया यहाँ आबिद गुल को। Nag is gone. He's surprised. Can't latch on to the ball. Unable to understand. Misread that one completely, and he's gone here. First blood is drawn. He's caught at extra cover. Miracle Yaqub does well, and Abid Gul is straight away among the wickets. He finds his man. He has his man straight away, and look what a wicket that of Nag. And Ishnag is gone here. He's on his way back to pavilion, and he's still in doldrums. What happened with him? What just happened? He's unable to understand that. He misread it completely and outplayed him with that delivery. Abid Gul getting better of Nag here, and that brings newcomer in at number 3. It is Feroz in at number 3 to join his partner Munir Butt. But we were talking about that HCC need a perfect start up front, but the man who's known for that kind of a knock, who's known for that kind of a start, is back to the pavilion. पहली गेंद पर विकेट, वो भी नाग का, और काफी उत्साहित नजर आ रही है टीम इस समय इरफान क्रिकेट क्लब की, क्योंकि नाग का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी टीम के लिए, और वो विकेट शुरुआत में आबिद गुल ने दिला दिया है। पहली गेंद को, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ठीक तरीके से गेंदबाज को पढ़ नहीं पाई, गेंद को पढ़ नहीं पाए, और वहां वो निराश कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ पहली गेंद पर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। मुजम्मिल फेरोज नए बल्लेबाज समझते, मुजम्मिल नए बल्लेबाज आए हैं, फेरोज आए हैं, क्षमा कीजिएगा, और फेरोज अहमद नए बल्लेबाज नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए मुनीर भट्ट के साथ, और ऐसे में आबिद गुल नए आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक विकेट की खुराक मिल चुकी है, वो भी नाग के रूप में, और ऐसे में पहली गेंद पर विकेट, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। Exactly. Why not getting rid of the danger man? In local cricket, Nag is real Nag with the bat. That one waits for the ball, obtain a splice.
Not in control, but nonetheless keeps it away. Will be happy. Able to lay bat onto the ball. A connection between bat and ball. Connect is that shot there. Find a mid-on in place. As Abid continues to bowl. Surprising first over here. That one beats the bat, hits the pad. But Abid says it was clearly going down leg. So half-parted shot for LBW. And bowler himself deciding against speed. He knows that it was clearly going down leg. 0-1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर दूसरी पारी का ये सेमीफाइनल मुकाबला जहां 216 रन बनाने हैं एचसीसी क्रालपोरा की टीम को इरफान क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। अगली गेंद आबिद गुल की और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। हवा में लहराती हुई गेंद इरफान उस ओर जा रहे हैं और जब तक वे गेंद तक पहुंचते गेंद को फील्ड करते पलटकर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज। तो यहां खाता खोला एचसीसी क्रालपोरा का 2-1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर में। He's off the mark, Feroz here. Little uppish and aerial he goes and clears the man at mid-on, but can't clear that long offence. Could only fetch a brace here. That brace takes him to 2 and HCC are off the mark and underway. And they are 2 for 1 in over number 1. Oh, good looking shot, but there is man. There is third man in place. Fumble, but to no avail, only a single. Does well to dab it. Guided to perfection, but find his man on the boundary line to stop that one. Will just be 1-3 for the loss of 1. 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी खासी धूप और शानदार बेहतरीन क्रिकेट। हालांकि शुरुआत में नाग का विकेट, आज उनके बल्ले से रन आए नहीं। पहली गेंद पर उनको कैच करवाया था आबिद गुल ने। मीर अकील द्वारा नजीर टाइगर, मीर अकील, दरदिश गोनी और उसके अलावा आदिल दादा, जाहिद डार, मोमिन वानी और उनके साथ साथ समीर बेल, इरफान लारा। और ये बल्लेबाजी की अगर हम बात करें इस समय जो कि एचसीसी क्रालपोरा की टीम बल्लेबाजी करे, उनके विरुद्ध जो टीम इरफान क्रिकेट क्लब की है और वो बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। पहले ओवर में अब तक 3 रन आए हैं, 1 विकेट। आबिद गुल इस ओवर की सबसे अंतिम गेंद लेकर के तैयार। सामने है मुनीर भट्ट। मुनीर के लिए ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ दरदिश की ओर खेला और उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं यहाँ पर। रन संख्या भी टिकी हुई 3। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर में 215 के जवाब में 3 रन बने और 1 विकेट नाग का गवा दिया है यहां एचसीसी क्रालपोरा की टीम ने। Wicket down here in the very first over. Nag departs, gone without scoring, unable to open his account, and now the responsibility with huge amount of pressure on their nerves. Munir Bhatt and Feroz got a job on their hands to cut out and do. But need to bat with some decency, with decent approach and apply themselves here. Zaidar walks across and having a word with Samir Bell. Zaidar knows that it's the high time to kill the game here, to get early 2-3 wickets and put the opponent onto the back foot and put their side to test. And if you get batters like Naga front, I think half the job is done. देखिए वो जिस प्रकार की शुरुआत करते हैं, वो विस्फोटक अंदाज के बल्लेबाज हैं, आक्रामक शैली से वो बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर रहता है विपक्षी गेंदबाजों पर। वो लेकिन जब शुरुआत में उनका विकेट मिला तो ऐसे में यहाँ कहीं ना कहीं हल्का सा दबाव जरूर है। प्रारंभ में बल्लेबाजों को नए सिरे से पारी को प्रारंभ करना है, शुरुआत बेहतर देनी है और न सिर्फ विकेट को सुरक्षित रखना है बल्कि वो जो आस्किंग रेट है उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता, गेंदबाजी समीर बेल के पास। परिवर्तन के तौर पर अब समझते दूसरा ओवर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद स्टंप्स की और मिडिल स्टंप पे ये गेंद और उतना उछाल था नहीं गेंद में और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। समीर बेल ने गेंदबाजी प्रारंभ की। 1.1 ओवर, 3 रन 1 विकेट। Second over, first ball just over the bells, but that's a good looking shot. That's a good shot there. Breaks free, but Samar Amin scored 143 with the bat. Now on the field, he's putting in a lot of energy and send us in a good return. He's trying to energize the field with his good skills on the field. He's quick on the field. As we watch Samir Bell again, there is fly slip in place for Bell. In the air and soft dismissal. And Munir Bhatt is gone. Look at that. Zaidar earlier on having a word with this lad how to bowl against Munir Bhatt, and Munir Bhatt roll back, underarm pull comes into play
and the short or a kind of a short arm jab, and find a mid-on in place. He says, Bell, you have an answer what I told you earlier on, and here is the perfect illustration of that. Take a look again. It's wicket number 2 down, and it is the turn of Munir Bhatt to walk away, and that brings Riaz Peer in at number 4 in a spot of bother. And look at the reaction from Riaz Peer and his facial expression telling us that they are in trouble. कि दबाव में है, लेकिन यहाँ बल्लेबाज की मानसिकताओं को पढ़ना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि, जो कि जाहिर डार ने किस प्रकार की गेंदबाजी, हालांकि दूसरे ओवर में समीर बेल का इस्तेमाल किया। और यहाँ समस्या बढ़ती हुई दिक्कत जरूर है, संकट की स्थिति है, दबाव में इस समय साफ नजर आ रही है, दबाव बल्लेबाजों पर है। जहां तक HCC क्रालपुरा की टीम का सवाल है, 4 पे 2 विकेट गंवा दिए हैं। पहले इश्तियाक रसूल 0 पे आउट हुए और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में मुनीर भट्ट, जो कि प्रारंभिक जोड़ी थी, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। फिरोज और उनके साथ अब नए बल्लेबाज रियाज पीर, जो कि टीम के कप्तान भी हैं, और एक कप्तानी भरी पारी, यहां से एक बेहतरीन पारी खेलनी है, दबाव उन पे है, क्या यहां से इस दबाव से निकल पाएंगे, ये देखना होगा। Well, 2 down, both openers back to hut, both are in the pavilion as they lost their wickets cheaply early. One gone without scoring, the other is here, and the second one caught at mid-on as we watch Sameer Bell. Bell is operating with the ball. Thank you very much. Coming back to the game, they are 2 down, Nazir, and I think good ploy from captain, using tight field, using mid-on to perfection, and that hop track working in the end. And look, Zaidar says, I knew if it flies, then it's okay. If it didn't take off, it will come straight to me. Here is the fresh ball for the newcomer. This could be, it is wicket number 3 down. Soft dismissal, and Riaz Peer is gone. 2 in 2, and he's on a hat trick here. And look at Irfan Lara there, and Riaz Peer. What a reaction and what a response. 3 falling up front, another one gone. It's Riaz Peer. He departs without scoring. And talking of today's all-important semi-final number 2, I think HCC is looking casual up front here. They are now 3 down, not able to put premium on the wickets. We saw now going, but needless shot from Munir Bhatt there. And now, what was that from Riaz Peer? I can't understand. आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और गेंद वहां टॉप एज लेती हुई हवा में उछली, विकेट कीपर ने कैच लपका। तीसरा विकेट 0 रियाज पीर, 0 इश्तियाक रसूल। और उसके अलावा अगर बात करें मुनीर भट्ट की, तो उन्होंने सबबते 2 रन बनाए, और ऐसे में 1 रन सबबते उन्होंने बनाया। 3 विकेट के नुकसान पे 4 रन बने हैं, 3 विकेट खोए हैं दूसरे ओवर में। और समीर बेल ने 2 सफलताएं प्राप्त की। यहाँ पूरी तरह से लड़खड़ाती पारी, हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, जहां से एक बड़ी चुनौती पूर्वक साझेदारी, तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन आसान परिस्थितियां आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि नाग आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, मुनीर भट्ट आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, और तीसरे विकेट के रूप में रियाज पीर। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की और देखना होगा किस साहिल नजार का इस्तेमाल किया गया बल्लेबाजी में। क्या यहाँ साहिल नजार कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाएंगे? 2 गेंदों से 2 विकेट, और हैट्रिक पे है तैयार यहाँ समीर बेल। और क्या समीर बेल अपने गेंद से यहाँ बल्लेबाजों की घंटी बजा पाएंगे, ये देखना होगा। Well, 3 of them back to pavilion. He's on a hat trick here. He's on a roll here with the ball, getting 2 in 2, and that brings Sahil Najar in at number 5. The wicketkeeper batter is in at 5. There is slip in place. Abid Gul is in slip card, and there is backward a point and a man at gully. Here is Sameer Bell to Sahil. Hat-trick ball, he does well, keeping a lot of respect and keeps it away. So no run there, a dot ball, and that hat-trick threat which was looming largely is away now. Sahil does well, quality shot there. That's 4, just about a 4 coming. Quality, Sahil Najar with a wonderful guide, earn him a 4.
चौका बटोरा जस्ट वखारा 8 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जो कि समीर बेल गेंदबाजी कर रहे थे और इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट प्राप्त किए और यहाँ उनका ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद HCC क्रालपोरा की टीम 215 के जवाब में पूरी तरह से दबाव में, संकट की स्थिति में 3 विकेट नाग, उसके अलावा मुनीर भट्ट और मुनीर भट्ट के अलावा तीसरे विकेट के रूप में रियाजपीर। तो 3 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। आबिद गुल ने 1 विकेट, पहली गेंद पर नाग का विकेट और वहां से पारी लड़खड़ानी प्रारंभ हुई और अब तक 3 विकेट गंवा दिए हैं। 2 ओवर में 8, 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये यहाँ चुनौती आपके सामने, इस चुनौती को पूरा करना होगा, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा बल्लेबाजों को और एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी चौथे विकेट के लिए फेरोज और साथी खिलाड़ी साहिल द्वारा। Abid Gul back for the second over. This is over number 3. And oh, that one, what a connection. Feroz goes after that one. It was in his zone. And it's all the way for 6. What a connection and what a shot. Fearless. And oh, humongous blow all the way. It's gone a country mile. It's gone back to HCC Kralpora area. नीचे तौर पे बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, मिडिल ऑफ द बैट से ऊर्जा का भी संचार हुआ स्ट्रोक के पीछे। तो कहीं ना कहीं गेंद काफी दूर और ऐसे में अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और विकेट भी बहुत बढ़िया है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। Beauty of using front foot. निश्चित तौर पे इसमें कोई दबाव नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्षमा कीजिएगा। और वो बेहतर बल्लेबाजी, आत्मविश्वास वहां बल्लेबाज का, हालांकि भारी भरकम शरीर, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं फेरोज, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या 14, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर, 2.2 ओवर की गेंदबाजी। But that shot, that 6, that was some shot. That was mind-blowing. But the next one, it's a nice comeback from Abid. Wonderful delivery. And little bounce there to tease and annoy batter again. And his wicketkeeper is again back. So here is the next one. He comes forward and it nicked. He's gone here. Caught behind and Feroz is gone. Wicket number 4 down. And HCC Kralpora in further trouble, in tatters straight away. They are now 4 down. Just a 6 coming off his bat, and all after that we have seen the back of this lad. He's going back to pavilion. They are now 4 down. और यहाँ चौथा विकेट, दूसरा विकेट आबिद गुल को, 2 विकेट समीर बेल के खाते में। आपके जो प्रमुख 2 तेज गेंदबाज हैं और शानदार, हालांकि अगर बात करें इस गेंदबाज की, यानी कि आबिद गुल की, वो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण दूसरे छोर से देखने को मिला समीर बेल द्वारा। तो इसमें दोनों गेंदबाजों ने अभी तक 2-2 विकेट शेयर किए हैं। 4 विकेट। HCC की टीम की समस्या बढ़ती चली जा रही है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, तो जल्द से जल्द इस पारी को समेटने का प्रयास गेंदबाजों के जहन में जरूर रहेगा। लेकिन क्रिकेट में आना चिंताओं का खेल है और आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, यहाँ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। दबाव बढ़ता चला जाएगा, आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल 14 पे 4 विकेट गंवा दिए। Akib Mir is in. Look at the situation in the middle. Situation demanded and Akib arrives. Akib Mir having a word with Abid Gul and Mirakil Yaqub. Now Akib is going to take his position. He's going to take strike as they're 4 down. And look how early Akib need to come in. Pravakar to walk in as they're 4 down. There was no one wall like him. So he's asked, oh wall, come on. Stand tall and have fun with the bat. And bail us out. We are in trouble. And here comes the man lad, the man weapon. He's himself a machinery, or the machine, to produce something special. Let us see what he's going to produce today. Now 2 slips in place. The second one is a bit wide, left alone. Wow, I can't believe. Oh, look at that turn. Not that far from that top of off. And it reminds me of once upon a time, Joe Root. Left alone a ball, and the ball then teasing and hitting the top of off. And even Root was himself surprised. Why did I leave the ball? Why did I leave the ball? And why I left that one? And likewise, he would have regretted, but he gets away with that.
शानदार गेंदबाजी आबिद गुल की और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, हालांकि अंदरूनी सिरे पे लगी और लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई, पीछे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। पहला रन आकिब मीर के खाते में और एक रन और खाते में जुड़ाया। एचसीसी के 14 से बढ़कर 15, 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प है, 4 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। आकिब मीर और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी सबब साहिल हैं वो नाबाद हैं और उनके अलावा जहांगीर लोन और नासिर बेली का आना बाकी है। तो आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प है, लेकिन यहाँ एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता साहिल और आकिब मीर को निभाने होगी। आबिद गुल अगली गेंद लेकर के और इस बार ये अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और यहाँ तीसरे अथवा चौथे ओवर की गेंदबाजी, ये 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ, 3 ओवर पूरे, 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 3 overs gone, 15 for 4. Well, I was talking about Akib Mir that left alone wasn't that far, and with the new ball in operation and knowing that Abid Gul can swing the ball both ways, you need to understand everything. But it worked for batter there. They left alone straight away, but he was very watchful. Eyes were on the ball, not casual to be precise, or precise. He was keeping eyes on the ball, vigil on the ball, and allowed the ball to go through under his eyes and just past the stumps there, or we can say missed by whisker. 3 पूरे, 2 ओवर की गेंदबाजी आबिद गुल द्वारा 2 विकेट और 2 ओवर की 1 ओवर की गेंदबाजी इससे पूर्व समीर बैल द्वारा, उन्हें भी 2 विकेट। ये दूसरा ओवर समीर बैल का, चौथा ओवर पारी का। पहली गेंद आके मीर बैकफुट पर गए और ऑन साइड में गेंद को खेला, जाहिर डार की और गेंद चली गई, फील्ड हुई, रन बनने की संभावना थी नहीं। 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 15 रन। हालांकि अभी भी 201 रन, काफी लंबा सफर तय करना है यहाँ HCC क्रालपोरा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद समीर बैल की, इस बार हवा में नजीर टाइगर की ओर, हालांकि गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, हालांकि थोड़ा सा अतिरिक्त जोखिम जरूर था इस स्ट्रोक में, लेकिन समीर बैल वहां पहुंच नहीं पाए और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या 19, 4 विकेट के नुकसान पे। 3.2 ओवर की गेंदबाजी आकिब मीर पे काफी कुछ निर्भर करेगा और वो एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है और उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है यहाँ गेंदबाजी की टीम के लिए। अगली गेंद और इस बार फिर खेला, लेकिन वहां खिलाड़ी है नहीं और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, आकिब मीर के बल्ले से निकलने वाला, 2 गेंदों से 2 चौके और रन संख्या पहुंच चुके हैं 23 पे, 4 विकेट के नुकसान पर 215 के जवाब में। शानदार बल्लेबाजी, लेकिन इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा क्योंकि एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। और ऐसे में क्या आकिब मीर और साहिल जो कि दायित्व उनके कंधों पर है और इस विकेट का महत्व समझते हैं, इस पारी का महत्व समझते हैं, इस मुकाबले का महत्व समझते हैं, तो क्या यहां से वो एक बेहतरीन पारी खेल करके अपनी टीम को विजय की ओर अग्रसर करा पाएंगे अथवा नहीं। Interesting field set mid off up. Mid on drops down to the long on boundary. Man at mid wicket boundary. Samir Bell trying to experiment. Something is cooking inside his body here. As Akimir is on strike. A little back away and clips it away. Beats the man at mid on, but can't beat the man at long on who does well. Who goes across and sends in a return, but not before the 2 batters. Pinched a brace. They pinch a brace. 2 more runs added to the tally. But Akimir is trying to rotate strike, which is a great sign. अच्छी रणनीति है क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स नहीं तो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। एक और अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बैकफुट पर जाकर के मिडिल ऑफ द बैट से वापस खेला समीर बेल की ओर। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 25 पे 4, चौथा ओवर। They are 4 down, just 25 on the board. Lot of responsibility, huge responsibility. I can simply say that entire side relies on this lad. Because Nog failed up front, he didn't give the perfect start what he wanted from Nog. Now it's this lad. You need to keep that scoreboard ticking. You need to keep wickets intact from his end and keep that scoreboard moving all along. Then they can think of something special with the passage of time.
आकिब मीर जो कि इस समय बीच मैदान में नाबाद हैं, साथ में साहिल, और दोनों बल्लेबाजों को बेहतरीन बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल 4 ओवर की गेंदबाजी में 25 बने, 4 विकेट खोए। आबिद गुल ने 2 ओवर की गेंदबाजी, समीर बल ने 2 ओवर की गेंदबाजी, और दोनों गेंदबाजों को 2-2 सफलताएं मिल चुके हैं। फिलहाल पारी का ये 5वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और एक बार फिर गेंदबाजी आबिद गुल के पास। सफल गेंदबाज अब तक के साहिल सामने होंगे 25, 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि खूबसूरत गेंद, और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 4.1 ओवर पावर प्ले ऑन है 25, 4 विकेट के नुकसान पर, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पर, क्योंकि यहां से इस पारी को न सिर्फ दबाव से निकालना है अपनी टीम को, बल्कि इस पारी को सजाना संवारना होगा और उस स्थिति तक पहुंचाना होगा, इन परिस्थितियों से निकाल करके उन परिस्थितियों में लेकर के जाना होगा जहां से फिर आप इस जीत की सुनिश्चित होने का जो है एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं आने वाले बल्लेबाजों के लिए। और क्या उस तक पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक बेहतरीन संघर्ष। और यदि आकिब मीर दूसरे सत्र में इनके कुल मिलाकर अगर यहां से बात की जाए 10-12 ओवर तक टिकते हैं, एक साझेदारी पनपती है, क्योंकि सिंगल डबल बेहतर तरीके से वो ले रहे हैं, बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता उनमें है, साथ में साहिल को सहयोग देना होगा, तो फिर एक संघर्षता इस मुकाबले में बनी रह सकती है। Look at Dardish Guni is designing the field here. He's designing that pattern here. He's keeping fielders in right places for Abid Gul. Having a word with Gul, then decided. Here is the next one. Little shuffle. He plants his foot first, then works it away, and is coming back for the second. Good running between the wickets. A brace to the tally here. Well, runs they require. They need runs here and there. They need to keep that scoreboard ticking and moving all along. 2 रन और खाते में 27, 4 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 5वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है, और लगातार दर्दिश और उनके साथ आबिद गुल की आपस में बातचीत मंत्रणा चल रही है, किस प्रकार की गेंदबाजी होनी है और किस टप्पे पे गेंदबाजी होनी है। ये गेंद एक बार फिर अच्छी गेंद थी, लेकिन स्ट्रोक बढ़िया था, तिरछे बल्ले के साथ सीधे वहां मीर अकीर के पास रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 27, 4 विकेट के नुकसान पर खूबसूरत और बेहतरीन वातावरण है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ क्रिकेट के चाहने वाले भी उपलब्ध हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसार तक पहुंचा है प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन पीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनटी। एक और बढ़िया गेंद इस बार डाउन द ट्रैक आकर के उठा करके खेलने का प्रयास साहिल का, संपर्क तो हुआ नहीं, रन मिलेगा नहीं। रन संख्या यहाँ 27 पे 4, और यहाँ से अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। एक साझेदारी, तो जैसा कि आपने जिक्र किया, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, वो सिंगल डबल जो रोटेशन रहेगा उससे कहीं ना कहीं दबाव से अपने आप को दूर रख पाएंगे दोनों बल्लेबाज। Need to take calculated risk in between and keep yourselves on track for a big chase. Clips it away again. Good looking shot again. Nice shape, but will find the man in place. Will only be a single, and that's all he's going to get here. One more run added to the tally. May I remind you, 216 is the target. To 16 is the target for HCC. Their fielders put down too many chances. Too many chances gone down. They dropped almost half a dozen catches today. And in the end we saw that Samar Amin cashed it on with his wonderful big bash style, going after the bowlers. Good looking shot again. This lad is going to break free. He's going to keep fielding side on their toes. This is the beauty of Akib Mir. And little dry coming into play, and he will keep the strike and keeps himself away from strike for a while now, back to keep that strike for the next over. Good shot. He plays it with the soft hands and scamper through, but can't break it free through offside. It was an easy one, because it is heavily cordoned at offside, packed offside field. Changing the bowling, Nazir Tiger to bowl. Just 2 overs from Bell, and captain felt the need to use Nazir Tiger with the new ball. It is still new, it is still fresh, but not that fresh the way we saw it in first 2 overs. Getting a little darker
The shape is fading away. Thank you, Irfan. Lara is on the field for his team. Irfan Cricket Club has Irfan. In Irfan manner, they have runs in black. Huge amount of runs on the board, 216. Why is the word huge or the mammoth? Because batting side are 4 down. If they have to compete and win this game, they need next level effort. They need next level cricket. And they need a perfect approach to get there. 29 for 4. Akimi 12 of 9. Sahil Najjar 7 of 8 balls. Nazir Tiger to bowl. We are going to be in over number 6. 5 overs gone. Last over mandatory properly. Akimi goes deep in crease, waits for the ball, then directs it to mid-on before Irfan can come in. Akib will scamper through and he walks with the shot there and walks off for a quick single. Slip is still stationed, is in place for Sahil Najjar. Oh, he was at a good height, but an awkward situation and position for Sahil Najjar. He imbalanced on that occasion. Packed upside. Majority of fielders and offside. Up she goes. Beats the man. And should hit the fence. It does. That's 4. That were brought to you by Just Bukhara. And with that boundary, there is addition in score. 33 on the board. Up she goes. And beats the man at extra cover. Was on edge of the circle. Can't cut it off. Can't pluck it. The next one. Oh, played. Oh, I was about to throw the plate on. But the inner edge takes it down to a spine like Bell in pursuit. Bell using his boot to stop the ball. Has he? Yes, he has. Does well to stop the ball. And he stops the ball. Limits the scoring down to 3. Saved 1 run. Well, Skellig umpire is still having a word. He says it's okay, it's fine there. 36 or 37. 37 for 4 with the slip in place. Little back away. He's always in mood of creating room. He tends to little back up and then open up the offside. Oh, that one it was. It stays a bit low, tad low. But he brings his bat down in time, keeps it away to long on. A single to end the over. And he will keep the strike for the next over. Done with power play. 38 for 4 after 6 overs. Adil Dada straight away holds the ball. It looks like Dada is going to bowl. And Dada is a handy customer. He can use that quicker one to perfection. Is he going to go with that conventional quicker? Or is he going to do something special here? Having a word with Akib. Akib says, shakes his head and says, okay, you may do what can you do. Whatever you want to do. Let me block you. Will he block him here? Will he block his ball? Let us see. Is it going to be a solid block or is it going to be a go after situation? Will he go after him? Will he give himself a go? Let us see. Is he gonna go? Oh, that one, it was indeed a quicker one to start with. Call is for 2. Akimir is always quick. The beauty about this lad is he's consistent, he persists, his precision, his accuracy, his eyes on the ball always there, his timing is perfect, and he's running between the wickets. He can bowl, he can bat. Oh, fumble on the field. As fielder knew that it's Akimir running from one end to other end, and nonetheless he's going to complete that run, and it does, so does he on that occasion. So 2 more runs added. और ऐसे में आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में है गेंद, उस ओर दरदीश जा रहे हैं लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, उनकी पहुंच से बाहर थी और ऐसे में रन संख्या में वृद्धि जरूर हुई और 1 रन और खाते में चढ़ा और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 42। 4 विकेट के नुकसान पे आदिल दादा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और इस बार आकिमीर के लिए हल्के हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में, और जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, इरफान
1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 43 तक पहुंच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद और इस बार फ्लिक किया उसको अंदरूनी सिरे पे बल्ले के लगने के बाद गेंद जा रही है सीमा रेखा की और वहां से रोकने का प्रयास, हालांकि सफलता जरूर मिली दूसरे प्रयास में, वहां गेंद को रोका जरूर और 2 रन तो जरूर मिले दोनों बल्लेबाजों को। और यहाँ HCC क्रालपोरा की टीम 215 के जवाब में दूसरी पारी में अब तक 6.4 ओवर में और 6.5 ओवर में रहा 2 रन और बने हैं 45 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद 7वें ओवर की 45 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद और इस बार एक और क्विकर रन का इस्तेमाल, तेज गेंद का इस्तेमाल किया था, वहां बैट और पैड का तो संपर्क उतना ज्यादा हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर की ओर चले गई। ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 45 4 विकेट के नुकसान। और इस साझेदारी पे काफी कुछ निर्भर करेगा जहां तक आकिब और साहिल की बल्लेबाजी का सवाल है, इस जोड़ी का सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे से पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, रन गति को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहिए यहां से कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी करके न सिर्फ रन संख्या को बेहतर तरीके से जो है बढ़ोतरी दी जाए, बल्कि वो जो आस्किंग रेट है उस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी और विकेट को साथ में सुरक्षित रखते हुए रन गति को लगातार बढ़ाना होगा। और आकिब मीर में वो क्षमता है, सहयोग साहिल को देना होगा। साहिल भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, दमखम है, जहांगीर लोन आने बाकी है, नासिर गनाई का आना बाकी है, और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ियों में अगर बात करें तो बल्लेबाजी आपके पास है। लेकिन यहाँ ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। रियाज पीर जो कि बीच मैदान में पहुंचे, जरूर कुछ बातचीत की आकिब मीर और साहिल के साथ, अब जाकर के वापस एक बार फिर डगआउट की ओर सामने आकिब मीर रहेंगे और गेंदबाजी एक बार फिर नजीर टाइगर के पास रहेगी। ये पारी का 8वां ओवर 7 में 45 4 विकेट के नुकसान पर इश्तियाक रसूल, मुनीर भट्ट, फेरोज और रियाज पीर, ये 4 बल्लेबाज HCC क्रालपोरा के आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। पहली गेंद और इस बार आकिब मीर के बल्ले से ये शानदार स्ट्रोक है और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका 49 पर पहुंच चुके हैं, रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पे। और ये क्षमता है इस बल्लेबाज की, ये काबिलियत है इस बल्लेबाज की, ये आत्मविश्वास है इस बल्लेबाज के पास, जिसका कि बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं एक लंबा सफर है, एक बड़ा लक्ष्य है, 216 रन बनाने हैं जीत के लिए। 4 विकेट वो गंवा चुके हैं, तो यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी करना अवश्य रहेगा, ये आकिब मीर से बेहतर और कोई जान नहीं सकता। तो ऐसे में उन परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बेहतरीन और लाजवाब पारी यहां से खेलनी होगी आकिब मीर को, तब जाकर के इस रन चेज को पार किया जा सकता है। 49 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। नजीर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन गेंदबाज है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से हवा में खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद एक टिपे के बाद इरफान मीर के पास, हालांकि उन्होंने गेंद को रोका जरूर और यहाँ देखना होगा ये क्या रन चौका अथवा सिंगल मिलेगा, ये देखने वाली बात है कि थोड़ी सी समस्या जरूर वहां बाउंड्री को लेकर के। हालांकि इरफान लारा ने हाथ से रोकने का प्रयास किया, उसमें सफलता मिली, लेकिन ये देखना होगा कि गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गई थी अथवा नहीं। ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में। शानदार और बेहतरीन क्रिकेट, लेकिन थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है और अंपायर्स वहां पे उपलब्ध है, दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और ऐसे में एक बेहतरीन मुकाबला। हालांकि अभी भी स्कोर बोर्ड की अगर बात करें 49 पे 4, इस गेंद से पूर्व ये 8वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं नजीर टाइगर। क्या यहाँ चौका मिलेगा अथवा 2 ही रन, ये देखने वाली बात। बाकी आकिब मीर वहां संतुष्ट थे कि यह चौका मिला है, स्ट्रोक बढ़िया था, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, जानबूझकर ये देखते हुए कि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडिश है और ऐसे में उठा करके खेला ये बेहतरीन स्ट्रोक। और अभी भी थोड़ा सा विलंब इस मुकाबले में, और इन परिस्थिति में बात करें तो बेहतरीन और शानदार क्रिकेट इस समय बिग बैश वाथोरा, दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, 216 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस समय 8वें ओवर में 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे और 4 रनों का निर्णय वहां मिलता हुआ
और इस चौके के साथ रन संख्या बजा करके 53 पर जा पहुंची 4 विकेट के नुकसान पर। चौका मिला जरूर या आकिब मीर को और कुल रन संख्या अब जाकर के 53 तक पहुंच चुके हैं। और निश्चित तौर पे यहां से एक चुनौती जरूर रहेगी HCC क्रालपोरा के लिए। और क्या वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्या यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले को जीत पाएंगे, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, अच्छी खासी धूप खिली हुई और दूसरी पारी वर्तमान स्थिति में चलती हुई। कुल रन संख्या की अगर हम बात करें, अब अंपायर भी जाकर के दर्शकों से थोड़ी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वहां पे थोड़ी सी समस्या जरूर दर्शकों के कारण आई थी। और ऐसे में अब चौका, वहां अंपायर का निर्णय मिलता हुआ चौके के साथ रन संख्या 53 पे पहुंची। अच्छी खासी मात्रा में यह दर्शक उपलब्ध जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फेशियल पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा HND ये स्पॉन्सर अपना समर्थन सहयोग दे रहे हैं। और ऐसे में उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी कमेंट्री टीम द्वारा। निश्चित तौर पर जो समर्थन इन स्पॉन्सर्स का मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनका समर्थन निश्चित तौर पर आवश्यकता रहती है। Little drama in the middle, and hopefully resolve it, and umpire is doing wonderful job. The two young lads on the field here, officiating semi-final number 2. Tiger and clips it away with that angle blade. Call is for 2 and chance of a run out. But look at that response from Samar Amin. He shies it in, but wicketkeeper not able to hold the ball. But luckily and hopefully there was man backing up Zaidar, who does well. 2 more runs added, but HCC need Akimi till the very last stand. Oh, this could be soft. It is soft dismissal, and he's gone here. Commentators, case I was just talking about, they need this lad till the very last moment. He's trapped. He took pace off the ball, and look at the response. And Akimir puts his head down, disgusted, and why not? He knows that. He drops his head, and it was a soft dismissal ball leading off the low bit of the leading edge. And soft dismissal in the end. He spawns it away. Back to the bowler. That brings Jahangir Lone in at number 7. ये शानदार कैच अपने हिफाजतों में कॉटन बोल्ड, नजीर टाइगर को सफलता, बहुत बड़ी विकेट आकिब मीर की मिल चुकी है यहाँ इरफान क्रिकेट क्लब की टीम को। और शानदार बेहतरीन गेंदबाजी, ये साझेदारी धीरे धीरे से पनप रही, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकिब मीर उनमें क्षमता है और कहीं ना कहीं वो यदि विकेट पे टिके रहे, विकेट पे ठहरे रहे तो मुकाबला संघर्षपूर्ण हो सकता है। और उनका विकेट मिला जहांगीर लोन, नए बल्लेबाज। और क्या यहाँ से इस मुकाबले में जहांगीर लोन नाल के बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं और बहुत सारे कीमती मान उन्होंने रचे हैं। इन परिस्थिति में उन्होंने टीम को संकट से निकाला होगा। और कौन बुला सकता है खैबर रेड पे मिले कि वो पारे 22 पे 7 168 तक पहुंचा था और टीम को जीत दिलाई थी। Nazir, that knock, that will be remembered, and that was innings of his life. That is lifetime achievement. And if someone asks you what you have done in life as a Jahangir Lone, you will say, I won the game in RPL for my team when we were 22 for 7, and I walked in and it was almost all over, and in the end I won the game for my team. That is the lifetime achievement. And you know how many people were part of the live broadcast? 31,500. Clips it away. You need to bat with a straight bat. You call it in Kashmiri Siddhigand. It's like that. Let us see, is he going to use that 90-degree elbow that you called hold the pose? एक रन वहां जहांगीर लोन के खाते में, एक रन HCC क्रलपुरा के खाते में। और फिलहाल रन संख्या इस समय 56, 5 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर। नजीर टाइगर अगली गेंद साहिल के लिए, और इस बार स्ट्रोक बेहतर था, स्वीप किया, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा किया, केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे साहिल और जहांगीर लोन। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 57, 5 विकेट के नुकसान पर 8 पूरे। Successful over comes to an end. The big wicket of Akib Mir, and Nazir Tiger provided that.
And Jahangir Lone is still in the middle having a word with Sahil Najjar. Well, Jahangir, he's got a lot of experience. Lone, big name in the valley. He's a crowd puller. Now see, we have seen the flowers in spring attract a lot of insects. And honeybee is one of them. I think he's got something like a gem on his body. People are attracted, and this lad he's crowd puller. He's attractive guy. He's blessed to be mighty, subhanahu wa ta'ala. But he need to understand that too. And here is the next one. Oh, awkward bounce, quicker one again. This lad, he can generate that pace. Looks like ordinary ball to everyone, but he can wreak that havoc with the ball because his quicker is more effective. बहुत ही बेहतर गेंदबाजी और उनकी विविधताएं काफी महत्वपूर्ण होती है। जब वो गेंदबाजी में विविधताएं लाते हैं, वो मिश्रण करते हैं, वो शानदार होता है, वो लाजवाब होता है और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता भी रहती है। विकेट जरूर मिला और यहाँ इससे पूर्व वो नजीर टाइगर को जहांगीर लोन के लिए इस बार जहांगीर लोन ने पुल किया। हालांकि एक रन तो जरूर मिलेगा। इरफान लारा वहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात है। एक रन जहांगीर लोन के खाते में, रन संख्या बढ़ती हुई 58, 5 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर पारी का प्रारंभ हो चुका है और आस्किंग रेट काफी ऊपर चला गया है। 13.46 तक पहुंच चुका है। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। अगली गेंद साहिल के लिए और इस बार हवा में है स्ट्रोक। इरफान ला रहा है उस और चलिए काम हुआ तमाम। साहिल मीर का ये 6वां विकेट गंवा दिया मात्र 59 पे। Sahil is gone. He's caught it long on. Irfan Mir as well, selling underneath the ball, comes quickly in. Eyes on the ball, waits for the ball to come in, using his reverse cup tactic to take that. One more bites the dust. And Sahil Najjar is on his way. Now Jahangir Lone is stranded on the other end. As Sahil lost his wicket in process of going over long on. He lost his shape there and is caught it long on. And they are now 6 down. It's 59 for 6. And so Aziz is here. Is a different customer. लगातार यहाँ दबाव में नजर आ रही है टीम और ऐसे में अगर देखा जाए इस मुकाबले की तो पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है एचसीसी क्रालपोरा की टीम। और निश्चित तौर पे मनोज भाई मेरे जुबान से हालांकि ये HCC क्रालपुरा के स्थान पर HCC हाकरबुल्ला निकला था। हालांकि HCC क्रालपुरा की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। और ऐसे में अगर बात करें जहांगीर लोन एक छोर से ताश खान, तौसीफ खान और ताश खान के नाम से लोकप्रिय और उनका शरीर अगर हम देखें भारी भरकम शरीर है और ऐसे में कुछ बड़े स्ट्रोक यहाँ से खेलने होंगे, कुछ बेहतरीन, क्योंकि अब यहाँ से न सिर्फ आपको आस्किंग रेट पे नजर रखनी है, विकेट को सुरक्षित और कुछ रन गति में उछाल के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता। I think huge damage is done. 6 of the batters back to pavilion. Well, won't be easy from here on. Need a partnership, need one big partnership of 100 and 120 to keep themselves in the chase. As we're just talking about that asking rate is another concern. It's going upwards. It's more than 13 and over, which is the biggest concern at the moment. Oh, it's called balle balle. Coming back to the game, there is a slip in place. Backward a point, Swedish point. Extra cover a man at super cover boundary. Long off is in place. Dabs it. Look, I was just talking about that bounceness. It all of a sudden, it looks flat. It looks slowest, flattest of a pitch, or the one of them. But on the other side, whenever ball hits this surface, all of a sudden it bounced on that occasion. It bounces in between. Oh, look at that one. He pounced on that occasion. And this is Taskan for you. And look at that elasticity. Elastic it is. And it goes on to the banks of that stream. And Jahangir Lone is smiling on the other end. Take a look again. It's huge and humongous. Monster and all the way for 6. What a connection. This is Taskan for you. Humongous blow. Monster of a hit. And when he hits, it stays hit. Look at his body structure, mashallah. He's got fully loaded biceps and triceps. And Taskan, this season for the first time, I am here to witness Taskan with the bat.
Here is the next one, tossed as well. Right behind that one, blocks it. And look at the reaction from Abid Gul. And Adil Dada is done with his over here. He finished his quota. And is talking of that to turn. And it was in his zone. So does the batter. He just cleared his left foot, then put it away in style. But that swing of the bat, Nazir. Whoa, that was majestic. And talking of those oohs and ahs, but that was more than that, and it flies all the way. It flew and all the way into the into the Kralpora area, not Hassanabad. I was about to throw it out. Well, then it is going to be Nazir Tiger to continue getting rid of the big man. Aqib Mir, he sent him packing. Jack goes deep, then Draps it wanted a single one, get that denied by the field. There is a huge difference if we talk of their fielding set and the fielding set we saw from HCC Kralpora. They dropped 6 of the catches. शानदार क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. 6 विकेट 65 पे और ये पारी का 10वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं नजीर टाइगर. सामने है जहांगीर लोन और ये एक कड़ा संघर्ष जहांगीर लोन और नजीर टाइगर के बीच, गेंद और बल्ले के बीच. इसमें ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद को खेला जरूर. 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन और खाते में जुड़ा 1 रन के साथ. अब रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 66 विकेट के नुकसान पर 6-6-6 10वें ओवर में. और पूरी तरह से यहाँ पर लड़खड़ा चुके हैं. पूरी तरह से आज अस्त व्यवस्थ कर दिया गेंदबाजों ने बल्लेबाजी को. आईसीसी क्रालपोरा की अगर हम बात करें, इस बार एक अच्छी गेंद जगह बना करके ऑफ साइड में खेला. दरदीश के पास गेंद पहुंची, रन बनने की संभावना थी नहीं. 67 पे 6 10वें ओवर में नजीर टाइगर एक बार फिर उनकी ये गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, एक और बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफी दूर और तौसीफ खान तास खान के बल्ले से निकलने वाला एक और जस्ट बुखारा छक्का. That is 6 over long off. Hits it straight over man at long off all the way for 6, half a dozen. Just Bukhara 6 coming, asking to be hit. Irfan having a word, Jack, don't make Taskan run. Let him bat in his natural way. He believes in big shots. He doesn't believe in singles. He's not the one who's going to make it with 1s and 2s, then crack it with 6s. But this lad, he's of a different caliber and class. He has his own way that we call the natural way. He has his own way and he's got the tactics and the basics cleared. He's going to go in his natural style. He believes in big shots, but Jahangir Lone will try to mix it up and design the pattern of his knock with singles, doubles, couples or the 3s at times. Then, of course, going for the big shots, as his role nowadays is as a slogger. But to be precise, he's a complete package. He's a top quality batter, the top order batter. It was better to use him at the top of the order, but nowadays all clubs are doing one thing. They persist with the tactic and technique, using him down the order. And again, he is batting in at number 8 here. 72 on the board. 2 6s coming for Taskan and HCC. Now Silk comes out. Needs more protection on the field for Taskan to put more curbs on his bat floor, the bat speed. Now the wicketkeeper is also up to the stumps. Clips it away. Should get one. Look, everyone, each and every batter will try to find the second one there. But Taskan is the first one, making that facial expression clear to his counterpart that Jahangir Lone, Jack, I'm just gonna fetch one. इसमें कोई दोहराई नहीं. 10 ओवर पूरा हो चुका है. 60 गेंदों से 143 रन बनाना है जीत के लिए और काफी बड़ा लक्ष्य भेदना है. 72 पे 6 10 ओवर की गेंदबाजी हुई है. 10 ओवर आने बाकी. दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला बिग बैश श्वार्थोरा का और मुकाबला इरफान क्रिकेट क्लब वर्सेस HCC क्रालपोरा के बीच. हालांकि इरफान क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए समर अमीन के 143 रनों के उस पारी के चलते 215 रन बनाए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर. 216 रनों का
लक्ष्य दिया और शुरुआत खराब रही। पहली ही गेंद पर वहां आबिद गुल ने इश्ताक रसूल को चलता किया और उसके बाद लगातार अंतराल के बाद 5 विकेट। हालांकि आकिब मीर ने कुछ साझेदारी में सहयोग दिया था, लेकिन वो एक अच्छी गेंद पर कट एंड बॉल होकर के आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तजम्मुल का इस्तेमाल परिवर्तन के तौर पर 60 गेंदें 143 रन चाहिए जीत के लिए और 11वें ओवर की शुरुआत तजम्मुल का परिवर्तन के तौर पर इस्तेमाल। Changing the bowling, Tajammul to bowl, pacer into the attack, and look, this is called a sensible cricket. He calls for the helmet. Here it is. He's going to put it on. He's going to wear it on. I think it's a good ploy to use helmet whenever there is pacer, because your safety comes first. When you are fit, when you are safe, then everything is safe. Then I use the word again and again. Then it's moj. You can enjoy each and every day. Every day is Sunday for you if you have yourself up to the mark, as fit as fiddle. And I'm gonna add one more word to it, balle balle. आप सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित, घर घर स्थिति सुरक्षित, निश्चित तौर पे आपका जो भविष्य वो सुरक्षित। और ऐसे में जब आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तजम्मुल नेवर की शुरुआत, पहली गेंद ताश ने उठाया लेकिन यहाँ हवा में है गेंद और उस ओर है समर, कैच लपक लिया यहाँ पर और ऐसे में ताश खान की पारी हुई समाप्त और ये 7वां विकेट तजम्मुल को मिलता हुआ पहली गेंद। Caught at long on, unbelievable catch, wonderful, surprising everyone, stunned, pin drop silence on that portion. Look, there is huge crowd in to back Riaz Peer side, but Peer and his team is in tatters. There's 7 down. That brings Nasir Bali. Now the Baramulla lads in the middle, the Baramulla base Dio, the couple from that part. We have Jangir Lona and his partner Nasir Ali in the middle. The Dio, the Jodi. We can't call it the Ranveer की जोड़ी। पिछले कुछ मुकाबलों से नासिर गनई ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है और ऐसे में देखना होगा यहाँ उनके पास एक पर्याप्त समय है। अगर बात करें इस मुकाबले की तो कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करें बल्ले के दम पर और ये वो समय है जहाँ से न सिर्फ आप इस पारी को सजा सकते हैं बल्कि इस पारी को संवारते हुए लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप में दमखम है, आप में क्षमता है। चाहे वो जहांगीर लोन की बात हो, चाहे वो नासिर गनई की बात हो, 2 दिग्गज खिलाड़ी, 2 महान अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन इन परिस्थितियों के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी होगी। कैसा कर पाएंगे? 59 गेंदों से 143 चाहिए और 73 पे 7 विकेट। The equation is now 59 balls, 143 runs needed. They are 7 down, just 3 wickets in kitty. Nasir Bali in at number 9. I think it's Irfan Cricket Club game now. They're dominating. They're right on top at the moment. Not at the moment. They were on top since ball 1 today, early this afternoon. Oh, chance of a run out. And Nasir Bali was in all sorts. He just gone over cautious. Balaki escape, Servai scare. Avoid doing this. And Abid Gul having a word with Tajammul as Tajammul gets wicket on his very first ball. But that catch, thanks to Samar Amin on the boundary line, just inches inside. Here is the next one. Does well guide us it, but there is man. There is Samir Bell. One thing is with Bell, you don't need to ring him up. He's always there. He can ring the bell. देखिए आपको बजाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा बजते रहते हैं, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो। और ऐसे में आपने जिक्र किया ही तो मैंने विस्तार से इसका जो है पूरा जो वो लेखा जोखा आप तक पहुंचा दिया। Funny expression from your side and illustration about that. You description coming in favor of Bell. Bell is very much own Bell. Is very much own Bally. And here is Tajammul again to Jangir Lon. Oh, takes a body blow. And it goes down towards a backward of scare, or just the final leg area to be precise. Just wide of that, behind 45 on side. 2 more runs added to the tally. This is the second semi-final match underway here in Vathura. This is Vathura Big Bash League. Credit to Riaz Peer and entire team for hosting it again and again. Over the past couple of years, it's a good success. And league is going on every year. And Vathura Big Bash League, I think it's season 5. Here is Tajammul again. Now Jangir Lon comes down the track, then finds a man in place, strikes the ball, but finds a man in place. Will just be one, that's all he's gonna get. The equation is now 139, 55 balls remaining.
55 गेंदों से 139 बनाने हैं, 77 पे 7 इस समय इक्वेशन। हालांकि 77 रन बने हैं, 7 It's like that हम साथ साथ हैं। अब निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। 77 139 चाहिए 55 गेंदों से। तो जम्मू अगले गेंद लेकर के नासिर गनई के लिए, इस बार गनई ने तिरछे बल्ले के साथ को गाइड किया था। कुछ और खिलाड़ी है आबिद गुल, उनके पास गेंद पहुंची, रन मिलेगा नहीं, यहाँ ओवर समाप्त हुआ। एक और ओवर समाप्त, 11 पूरे 77 7 विकेट के नुकसान पे 54 गेंदों से 139। Whose साथ you need, whose support and togetherness you want। देखिए मुकाबले की पारी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, तो ऐसे में जहांगीर लोन और नासिर बेली को आपस में साथ निभाना होगा एक दूसरे का, और बेहतर तरीके से निभाना होगा। इस सहयोग को एक दूसरे के साथ समर्थन देना होगा। दो दिग्गज खिलाड़ी हैं और निश्चित तौर पे आशाएं अभी भी लगी हुई है, उम्मीद की किरण जरूर होगी, क्योंकि इसके बाद आपके पास उतनी ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं। और अगर हम बात करें तो ये मान्यता प्राप्त जोड़ी समय अंतिम जोड़ी के रूप में होगी। हालांकि अभी भी 2 बल्लेबाजों का आना बाकी, लेकिन जिस प्रकार की ये जोड़ी है, आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों का बेहतर इन परिस्थितियों में रहता है। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अनुभव की कमी नहीं है, शॉट सिलेक्शन उनके बेहतरीन रहते हैं, लेकिन यहां इन परिस्थितियों के विरुद्ध आपको एक बड़ा लक्ष्य भेजना है। 139 बनाने हैं, 54 गेंदें बची हैं, यानी कि 9 ओवर में 139। क्या यहां से कुछ पलटवार होकर के इस मुकाबले को जीता जा सकता है, ये देखने वाली बात है। Let us see, are we in for that kind of a phase? Wicketkeeper up to the stumps. And what was that from Jahangir Lone? Better to go with a straight bat and drive the ball. But one thing is, I'm sure about that. When he bats against Sultan Waris, he looks different bat. He looks complete package and he looks in mood of never give up. I think each and every cricketer and every batter should tell himself every day, irrespective of an area and game, that I'm the best. It's my job. I won't give up. I'm the fighter. I need to fight it out. देखिए कहा जाता है कि कभी कभी कोई एक उल्लेख भी आपको जो है किसी के विरुद्ध रास आ जाता है, और वो सुल्तान के विरुद्ध उनको वो और उनके विरुद्ध बहुत बढ़िया खेलते हैं। हालांकि उसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ बेहतरीन पारी, लेकिन यहाँ समर बिन ने प्रयास किया, वो असफल रहा। छक्का मिला जहांगीर लोन को, एक और जस्ट मौका छक्का। Big 6 coming, slogs it away, slog sweep and earn him 6. Good shot. That is the natural way to do that. His trademark shot. Nowadays, not when he started cricket, when he was a teenager, when he was a young lad, when he used to bat at the top of the order, sometimes even down the order. But now the tactics has really changed drastically over the past couple of years. Here is Bell again. This one over backward a point, quality cut, earn him a boundary. Now some shots are coming and something to cheer about, and what he can do, first thing is to reduce the deficit. The other thing is that he can still sense a comeback. It won't be easy, but it will take that kind of determination, that resilience, and he need to persist. That perseverance is what he need. वो आत्मविश्वास चाहिए, वो क्षमता चाहिए, और उस प्रकार की बल्लेबाजी भी चाहिए। हालांकि 127 बनाने हैं, 50 गेंदें आपके पास हैं। ये गेंद और इस बार फिर एक और उड़ा दिया और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। Oh, that's huge and humongous, over mid wicket and all the way. Just Bukhara 6 coming, classy, and it's all the way again. 2 sixes on that portion. Samir Bell is having a word with Dardish Guni. Dardish having a word with Samir. How to bowl again as Jahangir Lone, as Aqib Miru Bashir pack their bags and are heading towards that very stop, and from that place they will be flying back home. And Nag is already, he has done that job earlier on. He finished his pack up, and these are on verge of making an exit from here. And may remind you again, this is second semi-final match of Vathura Big Bash season 2024. Here is Bell again to Jahangir Lone. There is fielder, there is Samar Amin, but won't be easy to get to the ball. Dropping well short of him after a couple of bounces into the fence for 4, into the mid-wicket boundary. Samir Bell is struggling today. Big over this, huge over this, eventful one. I think he's struggling with his left foot there. He's limping. He's having some issues.
99 for 7. Oh, 117 more runs needed of 48 balls. अरे ये बढ़िया ओवर रहा अगर देखा जाए HCC क्रालपुरा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 3 अथवा 2 छक्के कुछ चौके जड़े इसमें जहांगीर लोन ने। अरे कहीं ना कहीं अगर बात करें जहांगीर लोन जो इस समय 28 पर पहुंच चुके हैं 12 गेंदों से, एक पैर आबाद है नासिर गनई 99 पे 7 14.63 प्रति ओवर के हिसाब से 48 गेंदों से 117 रन बनाने हैं यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अरे ये जोड़ी अंत तक टिकी और इसी प्रकार की बल्लेबाजी तो कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। Yeah, I mean, we are in for a crackerjack of a chase then. If these two bat till the very last moment, believe me, these two lads can entertain everyone here. Crowd will get their money's worth. नेवर की शुरुआत तजम्मुल तैयार, सामने है नासिर गनई पहली गेंद गनई के लिए। इस बार गनई ने काफी ऊपर हवा में उड़ाया गेंद को, नीचे विकेट कीपर संतुलित हो रहे हैं लेकिन नहीं पहुंचे, अनुमान नहीं लगा पाए। यहाँ जीवनदान मिला नासिर गनई को और साथ में 2 रन और खाते में, और 2 रनों के साथ अब रन संख्या 101। कुल मिलाकर 13वें ओवर में 101 रन तक पहुंच चुकी है टीम 7 विकेट के नुकसान पर। 47 से 115 चाहिए जीत के लिए। 2 more runs added and Nasir Bali, without knowing where the ball is and where the ball was, he just gone after that one. A wayward swing of the bat and ball flies in air, miles in air. It's 115, needed a 47 ball. Here is the next one from Tajammul. That's a good looking shot. That's a cracking blow and beats the man at long on. Runs 4 of them that were brought to you by Just Bukhara. Half pull, half punch and gets straight to long on the bounce and beats the man there, and it bounced over his head into the fence. 111 नेल्सन अभी भी चाहिए 46 गेंदों से और 105 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 13वां ओवर तजम्मुल गेंदबाजी कर रहे हैं, नासिर गनई इस समय 7 पे नाबाद है। अगली गेंद तजम्मुल की लेकर के तैयार नासिर गनई के लिए, उनकी ये गेंद और एक बार फिर खेला लॉन्ग ऑन की और खाली क्षेत्र है, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका, 107 चाहिए 45 गेंदों से। 107 needed a 45 ball. Let's get over this again. Eventful one. Straight away, 2 back-to-back boundaries for Nasir and a brace. 10 off 3 balls here. Big over this. And they are still 107 away. This one, will it carry to the man on the bounce to Samar Amin? But the 2 batters crossed over for the second one again. Good running between the wickets. 2 more runs added this over. A couple, then back-to-back boundaries, again a couple here. 111 7 विकेट के नुकसान पे 105 चाहिए, 44 गेंदों का आना बाकी और इस ओवर में 2 गेंदें बची है तजम्मुल के। नासिर गनई और जहांगीर लोन क्या यहाँ से एक चमत्कार कर पाएंगे, क्या यहाँ से इस मुकाबले को जीता पाएंगे अपनी टीम को, ये देखना होगा। अगली गेंद लेकर के 105 चाहिए 44 गेंदों से, फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर उड़ा दिया, लेकिन इस बार वहां पे इरफान लारा वो दर्शक बनेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा छक्का और अब जाकर के 99 चाहिए 43 गेंदों से। The question comes down to double figures and it's now 99 of 43 balls. The 2 lads from Baramulla are bringing their side to some extent back into this one. Not to the larger extent, but to some extent we can say that. They are putting on a show here. They are fighting it out. Here goes Tajammul again. Oh, Edish one flies and it goes down to where his 3rd man. What is this? Just 4 runs, just a boundary. With a boundary there is addition in score and the eventful over comes to an end. It's 1-1 for 7. 95 needed of 42 balls. 42 गेंदों से 95 चाहिए और 95 चाहिए 42 गेंदों से 7 ओवर में 95 रन बनाने हैं। 121 7 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर की अभी तक का समाप्ति हो चुकी है और निश्चित तौर पे ये कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक बार फिर इस पारी को 2 बल्लेबाजों ने यानी जहांगीर लोन और उनके साथ नासिर गनई ने सजाया संवारा, बल्कि जीत की और एक सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? रियाजवीर ने कुछ बातचीत की, वापस लौटे और नासिर गनई जो इस समय नाबाद है 23 पे 9 गेंदों से और 12 गेंदों से 28 पे जहांगीर लोन। ये पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और ऐसे में इक्वेशन आपके सामने 42 गेंदें 95 चाहिए। 42 balls, 95 needed. Nog failed. Akimir resisted for a while,
Indian lost his shape and now gone for naught. Munir Butt lost his shape early, and few other names couldn't score, couldn't hit the right mark today, unable to make any mark. Here is Adil Dada for Jahangir Lon, and Lon improvise again, and ball goes down towards fine leg area. Fielder in pursuit, he gets to it, he gets to the ball. Will just be a brace, a couple. Look at the frustration from Samarami, and now he's taking out it on ball, and he's shying it in with tremendous sense of urgency. He's frustrated at the moment. He batted like a champion, scored 143 with the bat. Now bowlers all of a sudden are letting them down, but the batters need this. They need a kind of a boost here, but that isn't a good shot from. This isn't good at all. This is a wayward one. You were getting runs in a proper way. This isn't a proper way to deal. Going again, cross the line. It was better to get to the pitch of the ball and lift it up. Look, straight boundaries waiting for that shot. देखिए दो खराब शॉट सिलेक्शन वहां पे यार निश्चित तौर पर संपर्क नहीं हो रहा है, और ऐसे में अगली गेंद, और इस बार संपर्क तो हुआ लेकिन गेंद काफी दूर जाकर के मैदान से बाहर। एक और जस्ट लोकारा छक्का इसी बड़े स्ट्रोक की तलाश में, क्योंकि आवश्यकता भी है। जहांगीर लोन के बल्ले से निकला ये छक्का। 87 चाहिए 38 गेंदों से। 87 needed of 38 balls, 2 dots and a 6 coming. Not 2 dots, first ball brace coming, then 2 dots and a 6. Now makes it 8 of 4 balls here. 38 balls, 87 needed. Won't be easy, but if Jack bats till the very last moment, believe me, it's going to be a great game of cricket. And another heartbreaking chase. Oh, that one should fetch him 4. It does. Just about out of 4. Quality. He improvised on that occasion, and he improvised to perfection. And scoop comes into play. And nowadays, improvisation is common for everyone. Each and every batter tries to score runs behind square and onside and offside, going with the ramp. That pedal sweep or the Dilly scoop. Oh, knocked him over. Goes cross the line again. And look at the celebration from Dada. And Jahangir Lon all of a sudden lost control. What I was talking about, Nazir, it drops off a certain length beneath the bat. You miss high hit. Job is done. निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाज हैं। अंततः जहांगीर लोन को उन्होंने चलता किया। 83 चाहिए अंतिम 6 ओवर में, और 133 पे 8वां विकेट गंवा दिया है 14 ओवर की गेंदबाजी में। Needless from Jahangir Lon to me. Needless. There was no pressure at all on his nerves. Now we were sensing that Zaidar, Samar Amin and others, entire team, entire company, it was a kind of a moment and a kind of a response to Stumlai that they responded in such a way that no, Jahangir Lon can take the game away. The facial expression were telling us, and this lad, he was screaming again and again, Zaidar, what are you doing here to bowl? Why are you pitching in his zone? And it was a kind of a panic, but the panic button is again switched off. It was switched on for a while, it switched off again. निश्चित तौर पे वो जो हॉर्न था उस बटन पे उंगली दबी हुई थी, और अंततः वो बंद होता हुआ नजर आया। या जहांगीर लोन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए 8वें विकेट के रूप में। एक बेहतरीन पारी उन्होंने छोटा सा कैमियो जरूर खेला, लेकिन यहाँ अपने टीम को जीत तक पहुंचा नहीं पाए, हालांकि कुछ बेहतरीन योगदान, और ऐसे में वो विकेट दिलाया आदिल दादा ने। 14 पूरे 83 चाहिए 36 गेंदों से, और नए बल्लेबाज अब इम्तियाज बल्ला बीच मैदान में पहुंच चुका है। Imtiaz Malla is in at number 10 as they are 8 down. But I think he needed to bat alongside Nasir Bali. Would have been interesting to watch. Would have been something special on off air. I was talking about once they started feeling that heat. Once they felt the heat, all of a sudden Jahangir Lon lost his cool and he's cleaned it up. He's clean bowled of the bowling of Adil Dada, and Dada gets straight up the danger man. Dada removed him. And I was talking about that Dada is also a game changer. He's a match winner.
So does he again. बेहतरीन खिलाड़ी हैं यार, जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया कि वो एक मैच विनर खिलाड़ी है, शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रहती है और वो विकेट टेकर बॉलर है, तो उन्होंने वो सफलता और बेहतरीन सफलता प्राप्त की। यहाँ नासिर गनाई ने उठा दिया हवा में, इरफान लारा के पास, चलिए विकेट मिल गया यहाँ और नासिर गनाई को भी चलता होना पड़ेगा और इन परिस्थितियों में 9वां विकेट गंवा दिया है। 83 चाहिए, 35 गेंदों से आखिरी जोड़ी होगी बीच मैदान में। And now they are 9 down and Riyaz Speed, you can see that the signs of concern on his face are visible to everyone, and his supporters are leaving the center. They are packing their bags also, leaving the center early. Well, it's going to be Baba, his team here. HCC Kralpora on verge of making an exit, but still something to cheer and something to take away from this game and tournament. Well, it is 9 down, just a wicket remaining, and Aqib Khan is in at number 11. आकिब खान अब अंतिम जोड़ी के रूप में बीच मैदान में पहुंचेंगे और यहाँ अच्छी खासी मात्रा में दर्शक आए हुए थे और यहाँ से अब धीरे धीरे कुछ दर्शकों ने अपने घरों की राह जरूर ली है, क्योंकि ये देखते हैं अब आखिरी प्रयास रहेगा। 83 चाहिए 35 गेंदों से, अंतिम जोड़ी 133, 9 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे में देखना होगा ये शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन पिछली पारी में इरफान क्रिकेट क्लब द्वारा बिग बैश राठौरा सेमीफाइनल, और ऐसे में अब जाकर के इम्तियाज मल्ला और आकिब खान अंतिम जोड़ी के रूप में HCC करालपोरा की ओर से। और देखना होगा यहाँ से अब कितना वो अंतर रहेगा जीत और हार का, क्योंकि 83 अभी भी बना है 35 गेंदों से। और ऐसे में आकिब खान अंतिम जोड़ी के रूप में, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। कुछ पारियां उनकी हमें याद है, पिछली बार शेखपुरा बडगाम में उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेली थी। और ऐसे में देखना होगा क्या वो कुछ बेहतर यहाँ पर कर पाएंगे। और समीर बैल ने पहली गेंद पर यहाँ घंटी बजाई और नासिर गनाई का विकेट मिला। पहली गेंद पर घंटी बजी, नासिर गनाई चलते गए और मंसूर अजीज एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। और ऐसे में आज देखना होगा वह किस प्रकार से यहाँ से इस मुकाबले को समाप्त करेंगे, जहां तक इस टीम का सवाल है। फिलहाल 34 गेंदों से 83 की आवश्यकता। 83 needed of 34 balls. Jangilon playing that cameo doesn't last long, and he's caught. He was cleaned up, and the next one Nasir Belli, he was caught at long gone, and Aqib Khan in at number 11 wanted to guide it but missed out. He is demoted on the other. Aqib is quality player. We have seen a couple of cameos this season and last season, but today they are 9 down. There is no hope left. Only one thing, Nazir, that is to reduce the deficit. देखिए अंतर को कम करना होगा और शायद ये आखिरी औपचारिकताएं बची हैं। और इन परिस्थितियों में आकिब अगली गेंद का सामना करने के लिए समीर बैल चले आकिब के लिए। और एक और अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, तिरछे बल्ले के साथ उसको दिशा देना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, एक और डॉट गेंद। 83 चाहिए, 31 गेंदों का आना बाकी। अंतिम गेंद 15वें ओवर की लेकर के तैयार समीर बैल चले आकिब खान के लिए। अरे आकिब खान बोल्ड हो गए और मुकाबला जीत लिया। यहाँ पे इरफान क्रिकेट क्लब ने 82 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। और बिग बैश का फाइनल मुकाबला डोडो रेंजर्स और इरफान क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा। तब तक जब मुकाबला प्रारंभ होगा, वो फाइनल मुकाबला कब होगा, आप तक जरूर पहुंचेंगे उसका लाइव प्रसारण लेकर के। फिलहाल हमें दीजिएगा विदा। मैं शेख नजीर, मंसूर अजीज और मुनव्वर तनवीर के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।